हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक आरोग्य रिएक्शन में। मैं हूं कविता और आज हम देखने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया विच इज़ नोन बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज के लिए। तो इस्लाम से रिलेटेड सऊदी अरेबिया में कितने सारे स्ट्रिक्ट लॉज हैं वो आज हम देखने जा रहे हैं। दिस इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हर कंट्रीज़ में अलग अलग लॉज फॉलो होते हैं और इस्लाम को लेके सऊदी अरेबिया में जो लॉज है, क्या लगता है आपको वो सही हैं या गलत हैं या एक्चुअली वो अलाइन करते हैं कुरान के साथ? ये सब इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और मुझसे ज़्यादा बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं। बट आई जस्ट वांट टू नो कि किस तरीके के रूल्स होते हैं, क्योंकि मैं बाकी कंट्रीज़ में भी एक्सप्लोर करूंगी कि उनमें क्या रूल्स होते हैं और आप लोग डेफिनेटली मुझे इसमें हेल्प करने वाले हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो सऊदी अरेबिया में रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं इस्लाम को लेके, वो सही हैं, वो गलत हैं? क्या ऐसे नियम आपको लगता है कि बाकी कंट्रीज़ में भी अलाइन होना चाहिए? बट पहले हम रूल्स को देख लेते हैं और उसके बाद हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एट द एंड में। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो को देखने के लिए, बिकॉज आई एम श्योर इसमें से बहुत सारी चीज़ें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एज promise, thank you so much for all kind of support. We have crossed 15K subscribers, small achievement. मैं ज़्यादा टाइम इधर नहीं दे पाई because I was not well and my camera was also not good. Actually इसमें कुछ issues आ गए थे। But आप सब में से बहुत सारे लोग मुझे Instagram पे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ना अपनी मदर के साथ लेके रिएक्शन आइए। तो मैंने सोचा कि मम्मी को भी लेके आती, बट मेरी मम्मी ना उतना ज़्यादा नहीं देखती हैं टीवी एंड ऑल, वो बहुत डिफिकल्ट होता है उनके साथ रिएक्शन करना। बट ठीक है, मतलब एक कुछ रिएक्शंस मैं सोच रही हूँ उनके साथ आप लोगों के कहने पे मैं ज़रूर करूँगी। तो आप लोग मुझे कोई अच्छी वीडियो बताइए, जैसे जो पहली वीडियो मम्मी को मैं इस्लाम रिलेटेड दिखाऊँ। आपको क्या लगता है कि कैसी वीडियो वो होनी चाहिए या कौन सी, अगर आप कोई सजेस्ट कर सकते हैं मुझे, जिससे उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक आइडिया इस्लाम का शुरू हो जाए तो वो मैं ज़रूर देखूंगी। तो आइए इनको देखते हैं और आप सबके कमेंट्स देखने वाली हूँ मैं इस वीडियो को लेके भी, और मम्मी के रिएक्शन के लिए भी कौन कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए। तो बिना देरी के वैसे शुरू करते हैं। Saudi Arabia may have some of the strictest rules in the world when it comes to different policies. Let's take a look at 10 of them that Muslims and others have to follow. Number 10, you cannot convert from Muslim to another religion. Although there is no official law requiring all citizens to be Muslims, non-Muslim foreigners and many Muslims living abroad, including Saudi nationals whose views are thought to conflict with the government's interpretation of Islam, must practice their religion in secret and face prejudice, harassment, detention, and deportation as non-citizens. Legally speaking, children born to Muslim dads are considered Muslims, and leaving Islam to convert to another faith is punishable by demise and considered apostasy. Although there is a demise penalty for blasphemy against Sunni Islam, lengthy prison terms are the more typical punishment. In recent years, there have been no verified instances of executions for blasphemy or apostasy. Number 9, you must carry a religion card. Legal residents who are not citizens are required by law to carry an identity card with their religious affiliation, such as Muslim or non-Muslim. Residency cards from earlier times have religious denominations like Christian. According to the naturalization law, candidates must attest to their religious allegiance and get a certificate that has been approved by a local priest. Because the government forbids people from publicly gathering in groups based solely on their religious membership, there are significant restrictions on the freedom of religious assembly. Other restrictions on the freedom include the government's interference with the creation and upkeep of non-Sunni places of worship. The MOIA, the local government, and the province administration, which is technically a division of the MOI, must all grant authorization for the construction of new mosques. Number 8, disrespecting Islam is forbidden. It was uncommon to discuss delicate religious topics like sectarian conflicts, and it is illegal to criticize Islam. The CPVPV and customs officers are not authorized to seize personal religious materials because the government officially permits religious materials to be used for personal purposes within the nation. Additionally, the government has declared that at its diplomatic and consular missions abroad, it will advise foreign workers requesting visas about their rights to private prayer and possession of religious materials, as well as the names of the relevant offices where complaints can be lodged. Number 7, you must take religious classes in public school. Public school pupils at all levels are required to attend religious instruction based on the government's understanding of Islam, regardless of their personal religious practices. It is not mandatory for students attending private international schools to study Islam. To attend private international schools, Muslim students of other nationalities must get a dispensation from the Ministry of Education. Nevertheless, getting the clearance was rarely an issue. It
is forbidden to establish private religious schools that do not follow the official understanding of Islam. Number 6, if you're not Muslim, you'll have trouble in court. When determining compensation for accidental demise or disability, discrimination is evident. A Jewish or Christian male plaintiff is only entitled to half of the compensation that a Muslim male would receive if a court rules in his favor. All other non-Muslim plaintiffs are only entitled to 1/16 of what a Muslim male plaintiff would receive. In addition, judges have the discretion to reject the evidence of people who do not follow the official interpretation of Islam or who are not practicing Muslims in favor of Muslim testimony. In addition, courts follow the Quranic requirement that a woman's testimony in capital cases is worth just half as much as a man's. Number 5, Shiite mosques are harder to construct. Religious leaders and activists were not allowed to publicly voice opinions that were critical of the religious establishment by the government. As a result, certain Shia Muslims encountered difficulties when building their mosques. For instance, provincial authorities in Al-Asa have revoked some permits for already existing mosques and lecture halls and stopped the construction of some new Shiite mosques and community lecture halls. It was forbidden for Shia in other parts of Saudi Arabia to construct mosques tailored to their needs. The government did, however, permit the construction of a few new Shiite mosques in Qatif and Al-Asa, often after protected delays because of the several approvals needed. Dammam, home to a large Shia population, was not approved for the construction of Shiite mosques. Number 4, what they teach in schools. In 2010, a new curriculum for the 1st, 4th, and 7th grades was introduced nationwide. The English, science, and maths textbook for these grades were revised by eliminating all allusions to religion. However, the textbooks for those grades in Arabic and the new religious sciences still use terminology that is bigoted. A revised curriculum for the 2nd, 5th, and 8th grades was piloted in about 100 schools in 2010. It is expected to include less language that is intolerant by the following year when it is introduced in all schools. While reform programs for the remaining grades are being established, the majority of students were taught from textbooks that featured directives to end apostates and to test infidels for their kufr, or unbelief, and maintained language that was intolerant of other religious traditions, particularly Shiite, Christian, and Jewish views. Unrevised school textbooks persisted in having offensive references to Sufi and Shia Muslims, as well as other religious groups, with some even calling for violence. The textbook on monotheistic for males in the 12th grade, for instance, claims that individuals who worship tombs, possibly referring to the custom of Shia and Sufi Muslims of visiting the tombs of revered imams, thus engage in acts of heresy. The scripture continues by stating that legal repercussions follow a confirmation of apostasy, including the requirement that the apostate be put to demise if he refuses to repent. Number 3, Shia Muslims have a harder time finding jobs. Both the public and private sectors discriminated against Shia workers severely. Very few Shia held senior positions in government organizations and government-owned businesses. Many Shia felt that being openly identified as Shia would hinder their ability to progress in their careers. Shia were notably underrepresented in roles pertaining to national security in the MOI, the National Guard, the Ministry of Defense and Aviation, and other organizations. In primarily Shiite districts, Shia were more prevalent in the ranks of the traffic police, local government, and public schools. Regarding the hiring and promotion of Shia in the private sector, there was no official policy in place, but anecdotal evidence suggested that in certain companies, such as those in the oil and petrochemical industries, there was a glass ceiling that prevented well-qualified Shia from being hired ahead of less qualified Sunni colleagues. Number 2, no practicing sorcery. On suspicion of practicing witchcraft, sorcery, or black magic, police arrested and imprisoned an unspecified number of people. These arrests were reported in the media on a weekly basis. The CPVPV sections around the nation have anti-sorcery departments whose job it is to look into and report sorcery instances to local authorities. According to media reports, some of the alleged sorcerers seem to be quacks or charlatans, while others, mostly Africans, seem to be practicing traditional spiritual or healing rituals. Number 1, no issuing public fatwas. On August 12th, King Abdullah bin Abdul Aziz issued an order restricting the issuance of public fatwas to those who are members of the Council of Senior Religious Scholars and those under his permission. A number of contentious and occasionally contradictory fatwas published by academics and imams outside the council prompted the decision. The edict did not apply to private religious ideas expressed at an individual's request. People are free to keep looking for religious guidance on matters pertaining to daily living or particular circumstances that may come up and aren't covered by the official public fatwa.
fatwas. The Saudi Communications and Information Technology Center blacklisted 3 websites and the text messaging services associated with them after the decision. Numerous sites that were comparable voluntarily stopped publishing fatwas. That's all for today. Let us वाओ, सो दिस वाज ग्रेट इन्फॉर्मेशन यार. आई डिडंट नो कि इतना सब कुछ होता है सऊदी अरेबिया में. बीइंग मुस्लिम आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. एंड डू लेट मी नो अगर कोई और भी लॉ फॉलो होता है विच इज़ नॉट कवर्ड इन दिस वीडियो, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. हाउएवर एक बात मुझे समझनी है इस पूरे वीडियो में, वो ये था कि वाई थोड़ा सा बायसनेस मुझे ऐसा लगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है मुझे लग रहा है सऊदी अरेबिया में शिया मुस्लिम्स को लेके. तो शिया और सुन्नी 2 मुस्लिम्स के कैटेगरीज हैं जो इस्लाम फॉर डिवाइड हुआ था, जैसे हमने देखा था शिया एंड सुन्नी में. सो शिया वालों के लिए थोड़ी सी मुझे लगा कि शायद सऊदी अरेबिया के लॉज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिससे शिया को डिफिकल्टी आ सकती है. मगर अपार्ट फ्रॉम दैट इतने सारे बेनिफिट्स एंड कंपेयर टू, देखो यार जैसे आई बिलोंग टू इंडिया और यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं. लाइक इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप सेकुलर हैं, रिलीजन का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे. एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स, ये सारे जैसे लॉज में, गवर्नमेंट्स में, ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगे. दो इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सारे आपको रिजर्वेशंस देखने को मिलेंगे फॉर पीपल, फॉर यू नो फॉर सम मैटर्स, फॉर दैट सेक, बट नॉट लाइक इतना प्रॉपर रिनाउंड लेवल का जो यहाँ पे रिजर्वेशंस मिल रहे हो, जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं बीइंग मुस्लिम, चाहे वो आपकी एजुकेशन में हो, चाहे वो आपके लॉज में हो. इवन द जुडिशरी इज बीन यू नो अलाइनिंग टूवर्ड्स रिलीजन, और वहाँ पे भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या था कुछ और ऐसा जो इंटरेस्टिंग मिस आउट हो रहा हो, आपको कुछ पता है? आई नो सऊदी वॉज अ स्ट्रिक्ट कंट्री, बट बीइंग अ मुस्लिम इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी ये नहीं पता था. बट प्लीज़ ऑल्सो एक्सप्लेन मी, अगर आप में से कोई भी जानता हो जो ये वीडियो देख रहा हो, कि इसमें शिया को इतनी प्रॉब्लम क्यों है एंड क्यों ये मॉस्क बनाना इज़ बिट डिफ़िकल्ट. क्योंकि आई थिंक जो सऊदी गवर्नमेंट का है वो यही है कि जो ऑलरेडी बने हुए मॉस्क हैं आप उनको यूज़ करें, मगर नए मॉस्क बनाना वुड बी अ प्रॉब्लम. तो वाई इज़ इट सच? आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्सेज फॉर दैट. मैं मिलती हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. ऐसे ही अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस प्लीज़ दीजिए. होप आपने एंजॉय करा हो. मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ. ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. बाय बाय.